Hello everyone, welcome to Software Engineering 1. Now today I am going to start unit number 5, that is system design. Now first of all, what is system design and explain the characteristics of software design. Now software design is a course of problem solving and planning for a software solution. Software design starts after shaping software specification. Like here we mention some problem about a system, existing system. Now we are going to produce a new system of our problem. So here first we have take requirement, software specification. इट मीन सॉफ्टवेयर एनालिसिस के बाद जो फेज़ आता है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है. ठीक है, तो पर्टिकुलर जितनी भी रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस हैं, उसको डिज़ाइन में कन्वर्ट करना, दैट इज़ सिस्टम डिज़ाइन. एंड सिस्टम डिज़ाइन कैन बी डिफाइंड एज एन एक्शन दैट टर्न्स रिक्वायरमेंट टू अ प्लान और आउटलाइन ऑफ कोड. A software design is a meaningful engineering representation of some software product that is to be built. IEEE defines software design as both a process of defining the architecture, component, interface, and other characteristics of a system or component and result of that process, right? Now software design is a step of software engineering, and it defines software design is the process of define some component of system, some architecture define करना, interface define करना, ठीक है, and after that we can code that design. Now here I mention some characteristics of system design. First characteristics is the design must satisfy all the requirement explicitly included in the requirement specification as well as additional implicit requirement that our customer may have, right? Now we have to create one design. It means design component that include all the requirement, all the explicit requirement that mentioned by a customer, as well as it also include all the implicit requirement also that customer may not say about software. Okay, so you have to satisfy all type of requirement in design. Then second characteristic is the design must be readable and understandable, right? अगर हमने कुछ रिक्वायरमेंट पे से डिज़ाइन स्पेसिफाई किए, कुछ कंपोनेंट क्रिएट किया है, डेटाबेस डिज़ाइन किया है, या तो फिर DFD डिज़ाइन किया है, ठीक है, सो इट मस्ट बी रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द डेवलपर हु आर गोइंग टू डेवलप कोड. उसको वो डिज़ाइन जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है. सो from this design developers will test all the requirement and maintain it. And the last characteristic is the design should give a complete picture of the software system. It means the addressing the data, functional and behavior domain from an implementation perspective. Now पर्टिकुलर एक ही कंपोनेंट, सिंगल डिज़ाइन, सिंगल कंपोनेंट से या DFD पे से हमें पूरे सिस्टम का फ्लो पता चल जाना चाहिए, या डायग्राम पे से दो एंटिटी के बीच के रिलेशन का पता चलना चाहिए, स्ट्रेट ट्रांजिशन डायग्राम से ईच एंड एवरी यूज़र्स के स्टेट का पता चलना चाहिए, ठीक है. सो ईच एंड every component should describe a complete picture of the particular proposed system. Okay, so it address all the functional and behavioral requirement domain, so design should be complete. Okay, now the next topic is design principle. That is the most important topic that can be asked in examination, like describe or explain the design principle. Now there are some principle in that. First one is the design process should not suffer from a tunnel vision. It means if someone said some requirement, some customer said some requirement, and later on that डिज़ाइन के अल्टरनेटिव्स भी होते हैं, ठीक है. तो अगर एक कंपोनेंट हमने बनाया, सो ईच कंपोनेंट शुड बी इवेल्यूटेड बाय मीन्स ऑफ रिक्वायरमेंट
and that are to be fulfilled, right? नाउ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल होने चाहिए जो रिक्वायरमेंट को डेवलप कर सके, ठीक है, और उसके फीचर्स एंड गाइडलाइन भी मेंशन होनी चाहिए. हियर tunnel vision means there are multiple ways to design a requirement, right? So there are many more options for that. यहाँ पे हमें पर्टिकुलर ऐसी रिक्वायरमेंट डिफाइन करनी है, ठीक है, जिस पे हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके रिक्वायरमेंट पे से डिज़ाइन, और डिज़ाइन पे से रिक्वायरमेंट, और डिज़ाइन पे से कोडिंग. Okay, now second principle is the design should be traceable to the analysis model. Now you all know about analysis model. Analysis model include ER diagram, data flow diagram, okay, and data dictionary. Okay, so from the analysis model we should trace the all the design. So here I write that for each requirement it should be possible to determine which element of design satisfied it, and a single element of design model repeatedly relate to multiple requirement. It means जितने भी एलिमेंट हमने एनालिसिस मॉडल में देखे हैं, ठीक है, सो एनालिसिस मॉडल में जितने भी एलिमेंट हैं वो मल्टीपल रिक्वायरमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट जो है वो रिपीटेडली रिक्वायरमेंट में हो सकते हैं, एंड इट शुड टर्न आउट टू बी क्रूशियल टू हैव मीन्स ऑफ ट्रैकिंग हाउ रिक्वायरमेंट आर सेटिस्फाइड बाय द डिज़ाइन मॉडल. ठीक है, तो यहाँ पे सारे रिक्वायरमेंट जो है डिज़ाइन मॉडल सेटिस्फाई करना चाहिए, एनालिसिस मॉडल टू डिज़ाइन मॉडल में इजीली ट्रांसफ़र होना चाहिए. नाउ third one is, now design should not reinvent the wheel. It means, for example, systems are constructed using a set of design pattern, or many of which have likely been encountered before. Like if I want to develop login module, then that module have already developed by some developer. ठीक है, तो हमें रिपीटेडली वो मॉड्यूल को डेवलप करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट? सो दीज पैटर्न ऑफन कॉल्ड रीयूजेबल डिज़ाइन कंपोनेंट, हमें उसको रीयूज़ करना चाहिए. ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल है जो ऑलरेडी कंपनी में डेवलप हो गए हैं, तो दूसरे वेबसाइट में उसको सिर्फ रीयूज़ करना है, right? So it should always be chosen as an alternative to reinvention, and as we all know that time is too short and resources are limited, employee developers भी limited होते हैं, so design time should be invested in representing truly new ideas. ठीक है, जो already developed idea है उसमें time waste करने की ज़रूरत नहीं है, और new pattern को हमें integrate करनी है already existing pattern के साथ. Okay, clear? Now fourth one is, design should minimize the intellectual distance between the software and the problem as it exists in the real world. It means डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया है, हमने असेंबल किया है, ठीक है, दैट डिज़ाइन स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम आवर प्रॉब्लम डोमेन, इट मीन्स रिक्वायरमेंट. सो दिस स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. ठीक है, डेटा डिक्शनरी या हमने DFD बनाया है तो इट शुड बी ऑलवेज रिलेटेड विद द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. देन फिफ्थ वन इज, design should exhibit uniformity and integration. Now design should be uniform in the sense that it should appear that the entire design have been developed by a single person. Like जैसे कि हम DFD में particular rules है कि प्रोसेस जो है हम सर्कल में इंडिकेट करते हैं, डेटा डिक्शनरी के लिए हम हाफ बॉक्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो पर्टिकुलर जितने भी हम नेमिंग यूज़ करते हैं और जितने भी सिंबल यूज़ करते हैं, दैट शुड बी यूनिक. ऐसा लगना चाहिए कि वो एक ही पर्सन ने बनाया है. ठीक है, इवन दो दिस विल ऑलमोस्ट नेवर बी इन केस. सो डिफाइन रूल्स ऑफ स्टाइल फॉर्मेट बिफोर डिज़ाइन बिंग एंड फॉलो देम. The design is integrated if the interface between components have been carefully defined and used. Okay, सारे component है जो carefully define किए हैं, उसमें uniformity है, तो we can say it is integrated. Okay, then sixth one is, the design should be structured to accommodate change.
It means the essential design perception like abstraction, refinement, modularity. Now design concept जो है वो next video में आएगा. That design concept should be useful to accomplish this principle. It means that design concept must meet this structure. So design को हमें ऐसे structure करना है कि later on we can change that design concept or we can modify it. ठीक है. Then seventh one is the design should be structured to degrade gently even when aberrant data, events or operating conditions are encountered. इट मीन्स सॉफ्टवेयर को हमें ऐसे डिज़ाइन करना है, ऐसी कंडीशंस भी हमें डिज़ाइन करनी है कि फॉर एग्जांपल इफ़ सम इवेंट अकर, ठीक है, अनयूजुअल इवेंट अकर या ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ कंडीशंस और इवेंट अकर होती है तो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है वो टर्मिनेट ना हो जाए, राइट. सो इट मस्ट बी एग्जीक्यूट इन अप्रोप्रिएट मोड एंड विदाउट डिस्टर्बिंग सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी. ओके. देन 8th one is design is not coding. Coding is not design, right. Even when we describe detailed procedure designs and create for program component, but the level of abstraction of design model is higher than the source code. It means what, यहाँ पे abstraction ही होगा. design model अगर हम create करेंगे तो we can define input and output only, but we cannot define the procedure, we cannot define process, what happened to that input data and how to generate that output data, right. So यहाँ पे abstraction जो है वो maintain होगा. So here design is not coding and coding is not design, right. Only design decision made at the coding level address the small implementation detail that enable the procedural design to be coded. Now 9th one is design should be appraised to minimize conceptual or we can say semantic error. नाउ डिज़ाइन को हमें ऐसे स्ट्रक्चर करना है, ठीक है, ऐसे डिज़ाइन को ऐसे स्ट्रक्चर करना है कि यहाँ पे जो अनएम्बिग्यूअसनेस है, रिक्वायरमेंट पे अनएम्बिग्यूअस है, इनकन्सिस्टेंसी जो है, ठीक है, वो पहले से ही कंसिडर हो जाए. एंड लेटर ऑन जब हम कोडिंग स्टार्ट करें तो डेवलपर को ऐसी कोई एम्बिग्यूअसनेस जैसी एरर नहीं आए, इनकन्सिस्टेंसी ना आए, पर्टिकुलर इवेंट ए अकर हो बी से पहले और बी अकर हो ए से पहले, ऐसे इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए. सारी रिक्वायरमेंट डिज़ाइन जो है वो कंसिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है. तो डेवलपर को सिर्फ सिंटैक्टिकल एरर आनी चाहिए, ठीक है, डिज़ाइन रिलेटेड कोई एरर नहीं आनी चाहिए. So those are the principles of design, system design. Now if you have any query regarding this, then you can tell me. Thank you.